Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsin, your teacher for CSC322 Introduction to Operating System Concepts or the Operating System Concepts. We are studying the introductory part of the operating system, that is the first chapter of our textbook, Modern Operating System by Andrew S. Tenenbaum. And today, inshallah, we'll finish this chapter. The topic that we will cover today is the operating system structures. There are different structures available. We can say that some good practices that has been established in the last few decades, and we use these structures as a reference. So if you are interested, or if anyone is interested in developing the new OS, so this could be the guideline. It's not mandatory that we should follow precisely one of the proposed structure. We could have an hybrid approach, or we could utilize the good features or some excellent ideas presented in these structures and embed with some new ideas and combine some new ideas of some other structures and come up with the new structure. In fact, when we will go through these 6 models, we will see that the ideas that have been presented in the previous structure or some other structure have been utilized by some modification or with some new innovation or with some new ideas. So there are basically 6 reference models called monolithic systems, layered systems, microkernel, client-server model, virtual machines model, and exokernel. So we'll pick all these models one by one. First, the monolithic system. People call this model as a big mess and say that it does not contain any structure. Basically, it is a collection of all the procedures that have been integrated together, and compile all these procedures together using a compiler and produce the object code, and later on use the link facility that integrate all these modules into a single executable that is called the operating system. So obviously, if there are a number of procedures and each procedure is allowed to call another procedure, so we can say that no information hiding, a concept of the object-oriented programming where we have idea of information hiding, that is share the barest minimum information with the user that is necessary, and all the internal information is hidden. But in this simplest form of structure, there is no information hiding. So number of procedures available, every procedure is visible to every other procedure, and user is free to call any other procedure if it could serve some purpose or if it could provide certain services to the calling procedure. So although we say that is a big mess and there is no structure in it, but yet obviously there are certain organizations, there are certain principles, there are certain protocols. So these principles, protocols could result in presenting some structure also. So even in the monolithic system, there is a little structure, means there is a little organization. There are certain rules and regulation. So the services which are provided through system calls, we have already talked about it, that the system calls are the procedures embedded in the operating system that provide certain services. So these services provided by the operating systems are requested by putting the parameters, in a well-defined place. Called stack, and then executing a trap instruction. Do you remember that? We have discussed the system call in which we have talked about it, that whenever a user is required to get the services from the operating system, it is supposed to save
it is the calling procedure. Basically, whenever it calls some service, the operating system saves the parameter of that calling procedure onto a data structure which is called a stack structure. So all the parameters are saved. Then the procedure that is called the service procedure that is called, and this service procedure is intelligent enough that understand that how the operating system is going to provide you the service. So basically this service procedure traps instruction, means switches the machine from the kernel mode, from the user mode to the kernel mode, and transfers the control to the operating system, means kernel mode is running under the operating system, or the operating system is running in the kernel mode. So whenever a user requests, or whenever some program requests some service, what it does, it saves that particular program, then it decides which service has been requested, and then the service calling specialists are there, means these service calling specialists are basically the library procedures. These are the procedures, and we will call it here as the service procedures. These service procedures are expert of calling the system services. So these service procedures know what is the format, what is the syntax, and what kind of parameters are required that are put into the certain table, and then the trap occurs, and then the operating system procedure provide the service. So we have already seen that, and inshallah in the next lecture, or maybe in the explanation of some other concept, I'll come back to it again. But simple concept is that, which we have already studied, that any procedure that requires the operating system service, it is supposed to call the operating system service through a system call. And then there are a number of steps which are embedded, or which are the part of the system call to request the operating system for a service. So even this monolithic system, if we can see that the main procedure is here, this main procedure, this request for some service. So what it will do, it will call some service procedures. So you might have number of service procedures, and then these service procedure will generate or call the utility procedures. So they will generate the interrupts, and they will call the system call, and then the service procedure might request the different utility procedures to provide the service. So this is somewhat similar to the sequence that we have studied, that a main program that invokes the requested service procedure, and then a set of service procedures that carry out the system calls. Why? Because these service procedures have the understanding and knowledge to call the utility procedure. The set of utility procedure that help the services, that help the service procedure by providing the service. So basically, the lowest level of procedures which usually execute in the kernel mode are the very close, or maybe the part of the operating system that deals with the devices, that deal with the hardware, that provide you the operating system as an extended machine. It provides you an abstraction of the hardware, means providing you a very simplest form of the operating system to handle that. An example, we have seen that the I/O devices, we usually treat the I/O devices as if we are writing a file onto a device or reading a file from a device, writing a file onto the disk or reading a file from a disk. We are recording something into the sound card, or into the sound recording device, or might be we play audio device, and that provide us some multimedia sound clips, or some song, or some other instrument. So this is I have used this slide again that we have talked about in the previous lecture. So in order to understand this concept of main procedure, service procedure, and utility procedure, okay, these are three steps: main program है,
then it has a service procedure, and then this utility procedure. So we like to see कि ये तीनों के तीनों कैसे आपस में combine करते हैं. So suppose this is your program, this is your main program that has requested the service procedure. So सबसे पहला काम what it is required to do is to save the parameter onto the stack. So it will push the variables. आपको याद होगा कि हमने read system call में ये variable use किया था, n byte buffer is the address where to read. So these are the parameters. File descriptor is the pointer to a channel to communicate with the file. So these are all parameter that we save it, and then we call a service procedure. This service procedure are basically embedded in the library procedure. Okay, तो आप ये assume करें, go back to the previous slide, कि this your user program has requested a service procedure. How is doing that? Basically it is calling the library procedure. You assume that this library procedure is the service procedure. And this library procedure put the code for read in the register, क्योंकि intelligent है, इसको पता है कि कैसे आपने utility procedure को या आपने system call को call करना है. Then it execute the trap instruction that transfers the control from the user address space into the kernel address space. So it provides you the information here, and with the help of this information you select the kth slot. So if we go back to the previous slide, we said that that contains in table, that contains in slot k a pointer to the procedure that carries out the system call k. So let me explain with that कि ये आपका pointer आ गया, or it will point you to the slot, and this slot will contain the pointer to the system call कि किस service procedure को आपने call करना है, उसका address will be picked up from here. So you will select the kth slot, and that kth slot contains the pointer to the service procedure. So after the execution of this system call, the control is transferred back to this library procedure, and from this library procedure the control goes back to the user program जिस point पर उसने service request की थी. So we have seen that the usual structure is the same, और monolithic system के अंदर हमने देखा कि how the structure is implemented. Although there is no structure, but yet there are certain procedures, there are certain sequences, there are certain organization that could form three logical layers of the monolithic structure. One layer is the utility procedure, the second layer you assume that the service procedure, and on top of that is a user program. Okay, so that has resulted into the new structure. मैंने बात की कि उसको भी अगर आप तीन layer assume करवें, so the next structure is the layered system. अब इस layered system के अंदर we can see that there are generalization approach of monolithic system. Okay, monolithic system में मैंने कहा था कि logically हम assume करवें तीन layers हैं. So it is basically a generalization approach picked up from the monolithic system to organize operating system in hierarchy of layers. तो अब पहले तो हमने logical layers discuss की थी, assume की थी rather. अब हम देखेंगे कि there are real layers, physical layers, and we see that these layers are hierarchical, build up one after the other, one over the other, and each one is constructed upon the one below it. हर layer के ज़िम्मे कुछ हम एक जिम्मेदारी लगाते हैं, और वो that provides certain services, and the layer above that use that service and add on new features and provide another layer to the next layer, so that all the services could be handled very conveniently and easily. So the first system that was constructed is called THED. This is our Dutch word, so given in your book, so I have not reproduced this Dutch this is acronyms THE. So but this is important that it was the concept provided by our Dutch professor, a scientist, which was
Dijkstra. Dijkstra is a very well-known, internationally well-known professor who has given a lot of algorithms, and especially in the course of data structures and algorithm, we study number of algorithms proposed by the Dijkstra. So a lot of contribution by Dijkstra in the computer sciences, in the pure sciences, where the algorithms and the solutions to the problems are proposed and provided. So one of the contribution of this Dijkstra is the proposed structure of operating system called the layered structure. It was not just proposed, rather he produced the operating system. So that the system was a simple batch system which had a 32K of 27-bit word. It has a 32K words, and each word has a width of 32 bits. अभी तो हमारा वर्ड होता है 16 bit, 32 bit, 64 bit, but in those days the word size was 27 bit because the memory was very expensive, and we didn't have the hard disk also. We used to have the drums, and I'll explain you later on. So these system basically were composed of 6 layers, and these 6 layers are organized 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 layer is a processor allocation in multi-programming. I'll explain you in the next slide. Then the first layer is the layer number 1, which is the second layer, is the memory and drum management. This is not memory and disk management, it is a memory and drum management, क्योंकि उस ज़माने में disk नहीं थी, उस ज़माने में disk की जगह पर drum use होता था. Then we have our operator process communication, that the processes need to communicate with the users, and then they need basically console. So this console is provided, the responsibility of this layer is to provide this console to communicate the processes with the user or with the other processes. So input-output management system, so all I/O abstraction is done at this layer. Then we used to have the user program, and then we used to have the operator console. The operator console is basically a system console hai, and this system console is that the processor talk to the system. Initially we used to have the persons who are managing this system console, but now in the modern day technology and modern day later versions of operating system, this system console is again the service that provide the console services. We'll talk about it inshallah later on in detail. So Dijkstra was the author of this structure, this proposed structure, and he has produced the operating system that was based upon these 6 layers, and that was called the operating system. So let's talk about all these layers one by one. Layer 0 dealt with the allocation of the processor, switching between processes when interrupt occurs or time expired, the basic multi-programming of the CPU. We should understand that there is a CPU, one single CPU, that gives an illusion of multiple CPUs because it can handle multiple processes, and so rapidly, so fast, that it gives an illusion that all the programs are running in parallel. So what makes this particular module to shift from the one process to other process? Basically, there is a time slot. There was the time that was multiplexed, means that times were split up into different time slices. For example, in 1 second we could have the hundreds of the time slots of the millisecond. So one process might get a slot of 10 millisecond, one might get a slot of 100 millisecond. So you could have the equal time slot slice, or maybe you can have the different time slice for different processes depending upon the algorithm. So there could be two ways through which the
कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टेक्स प्लेस. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मीन्स के सीपीयू एक प्रोसेस से लेकर दूसरे प्रोसेस को देने में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि द टाइम स्लाइस हैज बीन कंप्लीटेड. जितनी टाइम स्लॉट एलोकेट की थी वो टाइम स्लॉट खत्म हो गई. So obviously this is the turn of the second process. The system will save all the contents of the process and allocate the CPU to some other process. दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि interrupt occurred. We have seen that कि any process can request at any time any system service. So suppose a process has requested a data that is to be read from the hard disk. So obviously when the process will create that request, will submit that request, this process cannot run further. So this process is certainly in a procedure that it cannot process further. So it will trap to the kernel mode, and then the time that the system is interrupted, can now the system, operating system decide के which process should take over now. तो दो तरीके हमने देखे. एक ये कि आपका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए, और दूसरा तरीका ये है through interrupt, through which the process takes the context switching. मैं आपको explain करूँगा later on के context switching क्या है. Then the next layer is layer number 1, which is called the memory management. Allocated space for processes in the main memory and part of process pages on 512K word drum process. I've said that on those days there was no hard disk, so we used to have a big device. It is just like a drum, जिसकी outer surface जो है वो magnetic coated थी, and we used to write on the outer surface of that particular drum. So it could provide us the उस ज़माने के हिसाब से lot of storage, जो कि 512 के की storage हो सकती है. आज के ज़माने का तो एक छोटी सी video can take much more size as compared to this 512K. But on those days जब memory बहुत limited थी, तो drum जो है was providing the secondary storage जो आजकल डिस्क प्रोवाइड करती है. सो हमने ये भी देखा कि अपर लेयर में देयर कुड बी मल्टीपल प्रोसेसेस. मल्टी प्रोग्रामिंग की ऑप्शन हमने देखी कि उसके अंदर मौजूद है, जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोसेसेस आर इन द मेमोरी, और सीपीयू जो है वो एक प्रोसेस से लेके दूसरे प्रोसेस को एलोकेट किया जा सकता है. सो इट्स मीन दैट if there are multiple processes are in the memory, this means that only the part of the process is in the memory, जो कि part उसका execute हो रहा है, and the remaining part could be onto the secondary storage. Okay, so वो जो secondary storage से main memory में आना और main memory से secondary storage में लेकर जाना, जिसको हम virtual memory management भी कहते हैं आज के दौर में, this was the responsibility of this layer. So this layer was responsible to manage the number of processes in the memory and onto the secondary storage, which was the drum. So the operator, the programs and the user need not to worry कि उनका program जो है क्या वो secondary storage पे है या वो primary storage पे है. Next layer was layer number 2, which handled communication between each processes and the operator console. Each process effectively had its own operator console. Console क्या है? Usually आज के दौर में अगर हम console की बात करें तो it could be your screen and the keyboard. Screen and the keyboard is considered as a console. एक ज़माना था console जो था, it was just like a printer attached with the keyboard. Keyboard होता था और उसके आगे एक attached printer था जिसके ऊपर एक paper जो scroll कर रहा होता था, and जो system के साथ, processes के साथ कोई messages communication थी, वो हम उस console को use करके किया करते थे. और उससे भी पहले yes there was the options जिसमें के बड़े स्पेशल तरीके से इस सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड की गई थी, that we have already talked about it in the first lecture. So कंसोल की जरूरत क्यों पेश आती है कि there might be certain commands
the interaction of process with the user, प्रोसेस ने कोई मैसेज दिया यूजर से, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, विंडोज के एनवायरनमेंट में आपको एक विंडो ओपन हो जाती है जो कहता है कि फाइल नॉट फाउंड, सो या कोई आपको एक मैसेज देते हैं, नाउ यू हैव अ चॉइस कि आप उसको रीट्राई करें या उसको कैंसिल करें या उसको कंटिन्यू करें. सो इसको communication between the executing process and the user is some sort of communication that takes place over the console. Okay. Next is managing the I/O devices and the buffering dealt with abstract I/O devices. मैंने आपको बताया था last time हमने discuss किया था operating system as an abstraction of the I/O devices. So if we are required to deal with floppy disk, the hard disk is very complicated, it's very tricky, and it's requires too many parameters to deal with. तो इसको सिस्टम जो है अपने अंदर समो लेता है, सिस्टम इसको हाइड कर देता है and provide a very simple and convenient interface to the user, as simple as reading a data from the file and writing a data into the disk. ये जो है फाइल की I/O है is just like the device I/O. So this abstraction is done under the layer number 3. Layer number 4, where user programs, they did not have to worry about process, memory, console or I/O management. Why? क्योंकि इनके नीचे जितनी 4 layers हैं, they are providing all these services to the user programs, and the user program need not to worry anything about the details that we have discussed now. Finally, the systems operator process means the system operator, it could be a process, it could be a console, that is you might request some services from the system also. We will talk about it also later on iski examples ke saath. So based upon this layered system, a very important operating system, a well-known operating system was launched. Some scientists, some professors and the professionals, they joined together and they used the concept of the layered system, and using the concept of the layered system, they introduced an operating system which is called the Multix system. The Multix system, instead of layers, a series of concentric rings, the inner one more privileged than the outer ones. ये जो layered system है, layer 0, उसके बाद layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप इसको assume करें कि layer 0 is a ring, nucleus. Over that we have another ring, wider one, that contains layers, ring number 0 in it. So that could be the next ring. Then we can have the next ring, then we could have the next ring. So we can have a concentric, एक ring से बड़ा ring, उससे बड़ा ring, उससे बड़ा ring. Basically, this is the implementation of the layered system in the form of the rings. Primarily, the entire operating system was a part of the address space of user process. Okay, the hardware that made it possible. So basically ये जो मल्टेक्स था, ये मल्टेक्स भी बहुत सारे प्रोसीजर्स थे. इन सारे प्रोसीजर्स को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसको नाम दिया मल्टेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. बिल्कुल ऐसे ही जैसे लेयर्ड जो सिस्टम है या जैसे मोनोलिथिक सिस्टम है, बहुत सारे प्रोसीजर्स को कंपाइल करके बनाया गया. तो ये जो concentric सर्कल का कॉन्सेप्ट है, इट इज ऑन अ रन टाइम. While you are executing, it gives you the illusion as if it is a concentric circles that are providing you the services. And it was only possible because of the hardware that was invented on those days. हार्डवेयर जो कि प्रोटेक्ट करते थे एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस के साथ इंटरफेयर करने में, या एक
मेमोरी यूजर की उसके दूसरे यूजर की मेमोरी से आइसोलेट करना जो है, that was convenient with the help of this hardware. So primarily it was the hardware that made it possible, and the implementation of this Multix system was possible. So it was very convenient to handle the concept and the logic presented in the layered system. Though the ring mechanism can easily be extended to the structure user subsystem. अब इसी concept को further extension was very easy. Extension was how the extension was very easy कि we could say that कि professor का program जो है, suppose it could be allowed to run on the ring number n, or the student का process है that should be running in n+1. So the user or the student should not be able to interfere with their grades provided by the or computed by the professor in the inner ring. So whenever any ring is required to have the service or request a service from the inner ring, it's a privileged job. So basically a trap occurs, means the intervention or interaction of the operating system is required, so that the security should be implemented, so that the outer ring should not intervene with the privilege, because जितना inner ring है उतना ज़्यादा highly privileged है. तो जब कोई outer ring request करके inner ring में आ रहा है, तो ऐसे ही है जैसे आप user space से kernel space के अंदर आ रहे हैं, user mode से kernel mode के अंदर आ रहे हैं, और आप privileged services जो है वो आप request कर रहे हैं. Okay, so this is very well taken care of by the operating system. और इसका मतलब ये हुआ कि जो unnecessary interfering है, whatever the service is required, सिर्फ वही service provide करेगा operating system, लेकिन unnecessary access जो है inner ring जो है वो नहीं provide करता. So that is the another idea of implementation of the layered system in the form of Multix. So the की एक और form आई, which is called the Multix system. Next is the microkernel. This is another concept or another structure of the operating system. The basic idea of the microkernel design is to achieve high reliability by splitting the operating system into small, well-defined modules. Only the microkernel runs in the kernel mode and the rest run as an ordinary user process. वो जो Multix था ना, Multix was running in the user space, सारे का सारा user space के अंदर वो run हो रहा था. Microkernel जो है इस concept के अंदर operating system को once again you can assume that there are different layers which are implemented, different modules which are implemented. आप layer by layer भी arrange कर सकते हैं and modules by modules भी arrange करते हैं. And only the barest minimum, the most privileged part is executed in the kernel mode. एक कॉन्सेप्ट तो ये हो सकता है कि आप लेयर्ड सिस्टम में डिसाइड करें कि कितनी लेयर जो है वो यूजर स्पेस में एग्जीक्यूट होंगी और कितनी लेयर जो है वो कर्नल स्पेस में एग्जीक्यूट होंगी. और अगर आप उसको बिल्कुल ड्रैग करते 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 बिल्कुल बेरेस्ट मिनिमम उसके ऊपर वे आए, एंड देन यू डिसाइड कि दिस इज द module that should only be executed, the barest minimum module that should be executed in the kernel mode and the rest should be executed in the user space. So it has got its own advantages and disadvantages that we will certainly discuss. So the small number of procedures are allowed in the kernel mode, minimizes the effect of bugs. Don't want the bug in the driver to crash the system. अब अगर आपका IO सिस्टम जो है, आपका जो ड्राइवर जो है, if it is running in the user address space or if it does something crazy or there is a bug in the system, then there is a chance, there is a very fair chance that it will crash. And if some module is running in the kernel mode and if it crash, the whole operating system crash. But if it is running in the user space और वहां पर ये क्रैश होता है तो फिर सारे का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश नहीं होगा, सिर्फ वो एक सर्विस थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, अगर आपका ऑडियो ड्राइवर जो है
इफ ऑडियो ड्राइवर क्रैश किसी भी वजह से कोई ऐसा काम करता है जिससे ऑडियो ड्राइवर जो है वो हैंग अप हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो व्हाट विल हैपन? ओनली द सर्विसेज ऑफ द ऑडियो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी सस्पेंडेड. वो सर्विस अवेलेबल नहीं होगी. और दिस पर्टिकुलर मॉडल में देयर इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन, दैट also keep on checking and testing the services of the operating system. अगर कोई सर्विस किसी स्टेज के ऊपर हैंग अप हुई है तो उसको स्टॉप करके रीस्टार्ट कर सकता है. So the mechanism is in kernel and policy is outside the kernel. क्या मतलब? If we are organizing the operating system in the form of this microkernel, we can say that the mechanism should be in the highly privileged one and it should be taken into the kernel mode. So the policies that should be handled in the user space. इसके एग्जाम्पल ये हो सकती है कि schedule processes by priority scheduling. आप हम we will discuss in the lecture, next lecture or maybe next to next lecture कि वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को CPU जो है उसकी जो स्केड्यूलिंग है वो कैसे की जाती है. लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम अज्यूम करते हैं कि अगर वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी शुड गेट द CPU फर्स्ट, हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस शुड गेट द CPU फर्स्ट. Once the highest priority process is finished, then the process having the lowest priority should catch hold of the CPU. या the highest priority process is blocked, किसी वजह से वो ब्लॉक हो जाता है और CPU स्पेयर हो जाता है, तब CPU will be handed over to the lower priority process. और जैसे ही हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो रेडी होगा दोबारा एग्जीक्यूट होने के लिए, तो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस को जबरदस्ती रोककर हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा. सो वी कैन असाइन प्रोसेस प्रायोरिटी इन द यूजर स्पेस. किसी प्रोग्राम के अंदर हम किसी भी प्रोसेस को कोई भी प्रायोरिटी डिपेंडिंग अपॉन द प्रिविलेज we could assign certain processes certain priorities, but the implementation means the implementation of the scheduler should go into the kernel mode. This is the example for that जो मैं भी आपसे बात कर रहा था कि suppose we have got these processes that are running on the top of it, where we could see the shell process, make call that creates new processes or some other user processes or user program that may be executed as a top layer. So they can just receive the command from the user, create new process, and they are competitors of the other processes, और scheduler जो है उनको pick करेगा, time देगा और वो execute होंगे. But these processes will be executed in the user space. Then there are some other processes which are providing these services. For example, file server है, process server means के management of the processes, creation of new process, termination of a process, inter-process communication. These are different processes, management task that will also be handled in the user mode. और ये वो स्पेशल प्रोसेसेस है REINC. आई विल टॉक अबाउट इट इन दी नेक्स्ट स्लाइड. बट इट डज बेसिकली ये वो प्रोसेस है जो कि देखता है कि तमाम की तमाम सर्विसेज जो हैं वो टाइम टू टाइम उसको चेक करता है कि रन हो रही हैं. इफ इट फाइंड्स एनी सर्विस विच इज़ नॉट बीइंग रिस्पॉन्डिंग और विच इज़ नॉट इन ए रनिंग स्टेट और किसी वजह से वो हैंग अप हो गई है या करप्ट हो गई है, तो उसको प्रोसेस को किल करके रिक्रिएट करेगा उस प्रोसेस को दोबारा, ताकि वो सर्विस जो है बहाल हो जाए. Then closer to the operating system we could run the drivers. मैंने आपको बताया था ना, drivers are the special software. Usually normal हमारे operating system में it becomes the part of the operating system, or it is considered the part of the operating system because they are required to deal with the IO devices directly. But here in this particular model we have seen that even the drivers which are required to deal with the IO devices are running in the mode, are running in the user mode. So अगर कोई यहाँ पर ड्राइवर करप्ट हो जाता है तो वो पर्टिकुलर डिवाइस जो है वो आपको अवेलेबल नहीं होगी, सारे का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश नहीं होगा. लेकिन अगर ये ड्राइवर कर्नल मोड में रन हो रहा होता तो ये सारे का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम
क्रैश हो सकता था और सारे का सारा आपको नए सिरे से रीबूट करना पड़ता। सो दैट इज द एडवांटेज। व्हाट डज इट मीन कि क्या ये प्रोसेसेस जो हैं इस यूजर मोड में आईओ डिवाइसेस से कम्युनिकेट करेंगे? नो। From this, when these drivers are required to communicate with the I/O devices, a trap will occur. So once the trap is occur, then this part of the microkernel will see that कि ये कौन सा ड्राइवर है और वो उसी ड्राइवर से कॉरस्पॉन्डिंग डिवाइस को उसके साथ लिंक अप करेगा और उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि साउंड ड्राइवर जो है वो डिस्क के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर दे, और ये इस किस्म की जो सिक्योरिटी चेक्स हैं आर ओनली इम्प्लीमेंटेड हियर, एंड दैट मेक्स द लाइफ मच ईजियर एंड सिंपलर फॉर द कर्नल और द ऑपरेटिंग सिस्टम. This clock process is basically the part of the scheduler. Usually the scheduler runs here. The sys is basically the scheduler that schedule all these processes for the execution. So this is a clock process, basically is a timer. Is a timer that is used by the scheduler to compute and manage the time slice or the slice that is time multiplexing, that is the times quantum which is allocated to one particular process. क्योंकि इसने closely interact करना होता है scheduler के साथ, so only this process is running in the kernel mode. So we have seen that के the size of the kernel has depleted, it has gone very small. So the device driver for the clock in the kernel, because the scheduler interact closely with it. Okay. So we have seen that in the above layer containing the servers, हमने यहाँ पे देखा कि ये servers हैं which are providing these services and do the job of the operating system. For example, file system management, process management, और मैंने आपको बताया process management का मतलब creating, destroying the processes and managing the inter-process communication maybe with each other. So the process communicate with each other means process communicate with each other through messages, through signals. ये भी इंशाल्लाह हम एक दो लेक्चर के बाद we will talk about it in detail inshallah. This is reincarnation server. ये process है that is something very special, reincarnation. This is a process that reincarnation server checks that all the services are running. If any of the service is not responding, तो ये जो periodically ये process run करता है, इसको पता चल जाता है कि कौन सी सर्विस जो है वो available नहीं है, उस सर्विस को दोबारा से रिवाइव करता है. The lowest layer contains the device drivers, वो जो मैंने अभी आपको बताया, ये lowest layer that is just above the kernel, or these are the drivers. Since they run in the user mode, they do not have a physical access to the I/O devices and ports. This physical access of I/O devices and ports is provided by the interaction of the kernel. So the driver builds a structure telling which values to write to which I/O port and makes a kernel call. And then the kernel checks that the driver is writing to the allowed port. So क्योंकि यहाँ पर अब physical device के साथ interaction की बात कर रहे हैं हम, so इसके लिए operating system का involve होना ज़रूरी है. So this is the another model which is called the microkernel. Next is the client-server model. Two classes of processes, the servers which provide services and the clients which use services. So हम कहते हैं server जो है, all the processes which are the server processes basically are created to offer services. Basically सर्वर क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर करवाते हैं, रिसोर्सेज ऑफर करते हैं. इट कुड बी अ फाइल सर्वर, इट कुड बी अ वेब सर्वर, और इट कुड बी एनी सर्वर प्रोवाइडिंग सर्टेन रिसोर्स टू द यूजर्स. अब यूजर्स को जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो जो प्रोसेसेस यूजर के बिहाफ पे इन रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, इनको यूज करते हैं, उनको हम कहते हैं क्लाइंट प्रोसेसेस. सो वी कैन हैव टू कैटेगरीज ऑफ प्रोसेसेस, या तो सर्वर प्रोसेसेस हैं या क्लाइंट प्रोसेसेस हैं इन दिस मॉडल ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. To obtain a service, a client process construct a message
saying that it wants and sends it to the appropriate server. क्लाइंट प्रोसेस जो है वो डिसाइड करता है कि व्हाट इट वांट्स, इसको क्या चाहिए, वो अपनी डिटेल जो है एम्बेड करके एक मैसेज में उस मैसेज को सेंड कर देती है टू द सर्वर प्रोसेस. So the client process need not to know whether the messages are handled locally in their own machine or by another process that is running on some other machine over a network, or whether they are sent across a network to serve on a remote machine. Process ने for example एक वेब सर्विस रिक्वेस्ट की है, वेब पेज रिक्वेस्ट किया है और उसने एक मैसेज बनाया है वेब सर्वर के नाम. अब देयर इज अ चांस कि वो वेब सर्वर भी उसी मशीन पे चल रहा हो या देयर इज अ चांस कि वेब सर्वर कहीं और चल रहा है, बिकॉज कि ये जो क्लाइंट और सर्वर मॉडल है इट बेसिकली हार्डवेयर के ऊपर इट कनेक्ट्स द क्लाइंट प्रोसेसेस, द client machines as well as the server machines. So client server machines are integrated over a network together. एक नेटवर्क के जरिए वो लॉजिकली एक ही एनवायरनमेंट बनाते हैं. ओके, सो ये उसकी हेडिंग नहीं है क्लाइंट की देखने की कि जो मैं सर्विस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इट इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द सेम मशीन या कोई और मशीन. हाँ, अगर वो उसी मशीन के ऊपर उसका मैसेज उसने डिकोड होना है तो कुछ एडवांस किस्म की ऑप्टिमाइजेशन की जा सकती है, बट इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि मेन फीचर जो है, मेन एडवांटेज ये है कि सर्वर जो है वो कहीं पे भी रन हो सकता है. सो द सर्वर देन डज द वर्क एंड सेंड्स बैक द आंसर बैक इन बोथ द केसेस. ओके, बोथ द केसेस कौन कौन से, कि अगर तो वो उसी मशीन पे रन कर रहा है तब भी वो उसको सर्विस प्रोवाइड कर देगा, और अगर वो उस मशीन पे रन नहीं कर रहा, इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर किसी और मशीन के ऊपर रन हो रहा है, तो वो वहां से सर्विस प्रोवाइड कर देगा टू दी रिक्वेस्टिंग प्रोसेस, टू दी रिक्वेस्टिंग क्लाइंट. तो यहाँ पे हम देखें कि वो एज्यूम करें कि मल्टीपल मशीन्स हैं, दीज मशीन्स आर कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क. ये सारी की सारी मशीन्स जो है एक बस जो है उसके जरिए जो है ये कनेक्टेड है और फिर ये आपस में नेटवर्क पे कनेक्टेड है. और ये इसका मॉडल है, क्लाइंट मॉडल है, और ये जो है कर्नल, ये जो है सर्वर मॉडल है. सो बेसिकली आपका जो क्लाइंट, कुछ आपके मॉडल जो है फाइल सर्वर यहाँ पे रन हो रहा है, प्रोसेस सर्वर यहाँ पे रन हो रहा है, और इट हैज गॉट बोथ यूजर स्पेस एंड दी कर्नल स्पेस. ऑब्वियसली इसने लोकल मशीन के साथ कुछ इंटरेक्शन करनी है जिसमें लोकल मशीन को उसको हैंडल करने के लिए इट नीड समथिंग, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट जो है एक रिडंडेंट कॉपी जो है वो सारे मशीन्स के ऊपर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं. और जब हर मशीन पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यू हैव गॉट अ रिडंडेंट पार्ट, द यूजर एड्रेस स्पेस एंड द कर्नल एड्रेस स्पेस. सो क्लाइंट से एक मैसेज आया, ये मैसेज पिकअप कर दिया इस मशीन ने, इस फाइल सर्वर ने, और ये फाइल सर्वर ने इसको सर्विस प्रोवाइड की जो दोबारा नेटवर्क से होती हुई इस क्लाइंट को मिल गई. सो द जनरलाइजेशन सेज दैट द क्लाइंट एंड सर्वर्स रन ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय अ लोकल और वाइड एरिया नेटवर्क. द टिपिकल यूज ऑफ द क्लाइंट सर्वर मॉडल इज in a network is client sends a request for web page to the server and the server returns the web page back to the client. Okay, ये हमने अभी देखा कि ये कैसे रिक्वेस्ट जा सकती है. ऑब्वियसली थ्रू मैसेज रिक्वेस्ट जाती है और थ्रू मैसेज उसे सर्विस वापस मिल जाती है. The next model is very interesting model, and this model is called a virtual machine. वर्चुअल मशीन मॉडल. हमने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, OS 360, IBM OS 360 ऑपरेटिंग सिस्टम. उस जमाने में बहुत सारे लोग जो हैं वो दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज एन इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल उस जमाने में जो इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम आया था दैट वाज कॉल्ड time sharing system, TSS. Time sharing system was launched by IBM, and it was a huge operating system.
the size of this operating system was not only very large but its price was also very high. So ये कोई $50 million का कॉस्ट थी इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, और ये अपनी कॉस्ट की वजह से और साइज की वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ TSS. So उस ज़माने में the scientists at IBM और ये they decided to provide the user interactive operating system. तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था CPCMS, हम इसके बारे में फर्दर बात करेंगे. इनिशियल वर्जन वाज कॉल्ड CPCMS एंड द लेटर वर्जन वर कॉल्ड द VM370 which were based upon the time sharing systems. ये VM370 provides the two basics functionality of the operating system. What were those? One is the multi-programming, and second, extended machine with a convenient interface than the bare hardware. हमने कहा था ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स को मैनेज करता है और एक एक्सटेंडेड मशीन के तौर पर हार्डवेयर को प्रेजेंट करता है. तो ये दो फीचर्स होते हैं, इन दोनों फीचर्स को इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने सेपरेटली हैंडल किया और बिल्कुल एक यूनिक अंदाज से, एक यूनिक स्टाइल से इसको इम्प्लीमेंट किया. So the essence of VM370 is not completely separating, is to completely separating these two functions. इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सबसे मेन बात थी कि उन्होंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दोनों कॉन्सेप्ट्स को, मल्टी प्रोग्रामिंग को बिल्कुल सेपरेट कर दिया और ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर को एज एन एक्सटेंडेड मशीन प्रेजेंट करता है उसको सेपरेट किया. सो आई वुड लाइक टू डिस्कस इट इन डिटेल. ये इसका मॉडल है VM370 का. इस VM370 ने जो कि डेट वाज रनिंग ऑन द बेयर हार्डवेयर, this is running, and basically the virtual machine monitor CMS runs on the bare hardware that does multi-programming, provides several virtual machines to the next layer up. ये मल्टी प्रोग्रामिंग आपने देखा कैसे प्रोवाइड कर रहा है कि ये जो VM370 है अपने से ऊपर इस लेयर के अंदर मल्टीपल मशीन्स प्रेजेंट कर रहा है, नीचे एक मशीन की मल्टीपल मशीन्स प्रेजेंट कर रहा है, and each one containing CMS, और ये जो CMS है that is a complete operating system as if it is handling the whole computer. और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है it has got everything. It has got IO instructions, it has got the kernel mode, it has got the user mode. So basically the virtual machine monitor runs on the bare hardware, or it provides multi-programming, and that multi-programming is with a new style. So virtual machines are not extended machines. Instead they are the exact copy of the hardware. ये जो नीचे हार्डवेयर है ना, इसकी exact copy यहाँ पे भी प्रेजेंट हो रही है, यहाँ भी प्रेजेंट हो रही है और यहाँ पे भी प्रेजेंट हो रही है. So every machine assumes कि उसके पास exact copy है हार्डवेयर की. So instead of the instead are the exact copies of the bare hardware and have kernel, user mode, IO interrupts and everything else in the real machine has. ठीक है, वो मैंने आपको जैसे बताया कि इसका यूजर मोड है, इसका कर्नल मोड है, इसके इंटरप्ट्स हैं. सो बिल्कुल एज इफ कि आप एक मशीन के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हैं. बट रियल लाइफ में क्या हो रहा है कि मल्टीपल आपने एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड कर दी है, मल्टीपल एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड कर दिया. और मजे की बात यह है कि ये अब हर मशीन जो है इज अलाउड टू इंस्टॉल इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम. जरूरी नहीं है कि अब ये CMS जो है यहीं पे तीनों पे CMS चलता रहे. ओके, सो द ईच वन कैन रन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम दैट विल रन डायरेक्टली ऑन द बेयर हार्डवेयर. जैसे कि आप न्यू कंप्यूटर लेकर आते हैं, उस पर आप विंडोज इंस्टॉल कर लेते हैं, और यू मे लाइक टू इंस्टॉल लिनक्स, और मे यू लाइक टू इंस्टॉल CMS, और इवन 370 के ऊपर 370 को भी इंस्टॉल कर सकते हैं. दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि 370 के ऊपर 370 भी इंस्टॉल हो सकता है. सो डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स रन, so they run different operating system जो के है, that could even be CMS, or it could be OS 360, it could be Windows, or it could be UNIX. So when a CMS program execute a system call, the call is shared by the operating system
in its own virtual machine, not by the VM370. अब यहाँ पर अगर कोई सिस्टम कॉल CMS ने की है तो नॉर्मली क्या होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एनवायरनमेंट में कोई सिस्टम कॉल होती है तो यूजर मोड से कर्नल मोड में ट्रैप हो जाती है और वो कर्नल उसको ट्रैप कर देता है और फिर वो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि ये सिस्टम कॉल जो यहाँ पर आई है, इट विल ट्रैप विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ CMS, नॉट बाय VM370। जो नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम लग रहा जो इंस्टॉल्ड है, जिसके ऊपर ये VM70 सिमुलेट हुआ है, ये इसको ट्रैप नहीं करेगा बल्कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ट्रैप करेगा। ओके, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? CMS then issue a normal hardware IO instructions for whatever was needed to carry out the call. जिस तरह नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि वो ट्रैप को रिसीव करता है और ट्रैप को रिसीव करने के बाद वो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है, तो ये भी हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करेगा। जब ये हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करेगा, व्हाट विल हैपन? देन दीज IO इंस्ट्रक्शंस आर देन ट्रैप्ड बाय द VM370। अब वहां तो हार्डवेयर ही होता है नीचे, बट यहाँ पे हार्डवेयर नहीं है, यहाँ पर VM370 है इसके नीचे। सो वंस अगेन ट्रैप जो है फिर ट्रैप हो रहा है। अब की दफा जो ट्रैप जो है वो हार्डवेयर में ट्रैप नहीं हो रहा बल्कि उसके नीचे वाली लेयर VM370 में ट्रैप होगा, विच देन परफॉर्म देम एज ए पार्ट ऑफ इट्स सिमुलेशन ऑफ द रियल हार्डवेयर। अब VM370 ने क्योंकि सिमुलेशन की है, VM370 को प्रिसाइजली पता है कि हाउ दिस सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड। सो VM370 जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है। ये सर्विस पिक करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है VM370 CMS का और फिर वहां से ये वापस यूजर मोड पे चला जाता है। सो बाय कंप्लीटली separating the functions of multi-programming and providing extending machine, each of the function could be much simpler, more flexible and much easier to maintain. जिसका काम सिमुलेशन करना है VM370 का, वो सिमुलेशन कर रहा है, उसको मल्टी प्रोग्रामिंग में फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग दी ईच मशीन टू वन यूजर। और अब हर यूजर जो है वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करता है और अपने प्रोग्राम जो है उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा है। It's a very interesting way of providing this service by the operating system. So we have seen how this virtual machine has provided the environment to the user, and now this multi-programming environment is very different as compared to the multi-programming environment provided by the other operating system. दूसरे operating system जो multi-programming की environment provide करते हैं वो normally आपको एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में रहते हुए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दिस वर्चुअल मशीन जो है इट हैज प्रोवाइडेड यू द एनवायरनमेंट एंड दैट एनवायरनमेंट इज बेसिकली द environment that allow you to have multiple operating systems. तो एक ही मशीन के ऊपर आपके पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स है और फिर हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप उसकी जो इनहेरेंट कैपेबिलिटी है ऑफ हैंडलिंग दी मल्टीपल प्रोग्राम्स और मल्टी प्रोग्रामिंग वो भी आप यूज कर सकते हैं, या आप एक सिंगल यूजर या एक CMS जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर भी उसको आप यूज कर सकते हैं। This virtual machine rediscovered recently. IBM and some other companies had been using these virtual machines for 4 decades. But in recent past, HP has added a virtual machine or its support, or very recently, the PC environment has jumped it into this virtual machine, and they call it as a virtualization, largely been ignored in the past by the PC environment. So the new software and new technologies have combined to make it a hot topic. Very recently
बहुत ज़्यादा वर्चुअलाइजेशन की बात हो रही है, बिकॉज अब जो उसके इनहेरिटेड फीचर्स हैं, उसकी एप्लीकेशंस नाउअडेज आर सो मैनी कि लोग जो है इसको रीडिस्कवर कर रहे हैं और इस वर्चुअल मशीन को वर्चुअलाइजेशन का नाम देकर इसको यूज़ कर रहे हैं, और लॉट ऑफ रिसर्च इज बीइंग कैरिड आउट इन द वर्चुअलाइजेशन. So many companies have run their email server, web server, FTP servers and other servers on a separate computers or sometime with different operating system. ये एक requirement थी. With virtualization, now it is possible कि आप एक ही machine के ऊपर, एक ही computer के ऊपर आप multiple एप्लीकेशन, आप उसके ऊपर वेब सर्वर भी रन कर सकते हैं, आप उसके ऊपर ईमेल सर्वर भी रन कर सकते हैं, उस पर आप एफटीपी सर्वर भी रन कर सकते हैं. नॉट ओनली दिस, यू कैन यूज मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. आप वेब सर्वर जो है वो विंडो बेस्ड कर सकते हैं, ईमेल सर्वर आप लिनक्स बेस्ड कर सकते हैं. सो यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी नाउ कि आप उस पे वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं. वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं. सो वर्चुअलाइजेशन इज आल्सो पॉपुलर इन दी वेब होस्टिंग वर्ल्ड. कैसे कि वेब होस्टिंग कस्टमर्स वर फोर्स्ड टू चूज वन ऑफ द टू ऑप्शंस. One is the shared hosting and other one was called is called a dedicated hosting. Shared hosting में क्या है कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी जो है वेबसाइट जो है वो एक सर्वर के ऊपर रखी है और वो शेयर कर रहे हैं उनके साथ एक सिंगल मशीन. और शेयर्ड होस्टिंग के अंदर एवरी यूजर हैज बीन प्रोवाइडेड यूजर नेम एंड पासवर्ड और एक लिमिटेड एक्सेस उसको प्रोवाइड की गई है. ऑब्वियसली शेयर्ड क्यों है कि उसकी कॉस्ट कम है, क्योंकि एक मशीन बहुत सारे यूजर्स यूज कर रहे हैं. बट विद द हेल्प ऑफ दिस वर्चुअलाइजेशन, दिस वेब होस्टिंग ऑन ए वर्चुअल मशीन कैन बी एक्सटेंडेड टू डिफरेंट यूजर्स. और अब हर यूजर जो है वो अपनी एक ही मशीन जो है बट कैन अज्यूम इट एज ए इंडिपेंडेंट वर्चुअल मशीन and can launch its or his or her own operating system. अपनी environment बना सकते हैं, अपनी environment बनाकर उसको independently use कर सकते हैं. So the web hosting on virtual machine at rent, a single physical machines can run many virtual machines, each of which appears to be a complete machine. अब obviously जब वो share कर रहे हैं तो उसी rent में जिसमें उनको shared मिल रहा था, शेयर्ड सर्विस मिल रही थी, उनको एक एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट सर्विस उनको मिल रही है और उनको पूरे का पूरा कंट्रोल मिल रहा है. सो कस्टमर कैन रन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एट ए फंक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ with the nominal cost, and they can get their dedicated servers. Also through virtualization, end users are able to run 2 or more operating systems at the same time. So they can hire some space, they can hire a virtual machine, they can hire the machine with nominal rent, and then they run one instance, they run Windows, on the other instance they might run the Linux. Okay, so with the nominal cost they have got a lot of flexibility and advantage. Another concept that has recently been launched is the hypervisor, type 1 hypervisor and type 2 hypervisor. टाइप 1 हाइपरवाइजर वही है जो कि मैं काफ़ी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं जो इस टॉपिक के अंदर कि यू आर रनिंग अ वर्चुअल मशीन ऑन अ बेयर हार्डवेयर, VM370 या VMware आप जो है वो रन कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन बेयर हार्डवेयर. दैट इज प्रोवाइडिंग यू दी वर्चुअल मशीन्स, और हर वर्चुअल मशीन में आपने एक में विंडोज इंस्टॉल किया, एक में लिनक्स इंस्टॉल किया. टाइप 2 हाइपरवाइजर, nowadays lot of research has been done and lot of development has been done in the virtualization. और अब क्या है कि आपके पास ऐसी applications are available, virtual applications are available. That means कि आपने पास एक environment है, for example ये आपकी UNIX environment है और ये आपका host रन कर रहा है यहाँ पर just like that, और ये आपकी Windows environment है.
अब विंडोज एनवायरनमेंट में आप एक विंडो की एप्लीकेशन रन करें जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल Ubuntu, which provides you the Linux environment basically, और या कोई और ऐसी एप्लीकेशन that is providing you the virtual machine application. अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्लीकेशन है वर्चुअल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि विंडोज में रहते हुए विंडोज के एक प्रोसेस के तौर पर, एक प्रोग्राम के तौर पर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि Ubuntu एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज पे। जब आप उस एप्लीकेशन को रन करेंगे, इट विल गिव यू अ सबसेट ऑफ द यूनिक्स एनवायरनमेंट, यूनिक्स एनवायरनमेंट, जहां पे आप यूनिक्स और यूनिक्स का प्रोग्राम्स को रन कर सकेंगे या प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। So this is the example of the type 2 hypervisation, where the virtualization has been implemented not on bare hardware, but it has been implemented over the platform, over the operating system. So type 2 hypervisation runs on application programs. So that is the recent development in the history, and that is again very popular, and lot of work is done on this virtualization. Then there is another concept which is just like the previous one that we have discussed. So rather than cloning the actual machine like virtual machines, another strategy is to partition the resources. बजाय इसके कि आप, जो मैंने आपको बताया था कि each subset is assuming that it has got the access to the complete hardware, सारे के सारे हार्डवेयर जो है उसके पास अवेलेबल है, इसकी बजाय आप उसके हार्डवेयर के सबसेट्स कर दें और हर वर्चुअल मशीन को एक सबसेट ऑफ हार्डवेयर प्रोवाइड कर दें, सबसेट ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दें. So this type of structure is called as a exokernel. This is called the exokernel. That is another form of this virtualization of the virtual machine. So allocate each user a subset of resources. So for example, अगर आपने हार्ड डिस्क के देयर आर ब्लॉक्स हैं तो आपने यूजर 1 को 1024 ब्लॉक्स दिए हैं, तो फ्रॉम ब्लॉक नंबर 0 टू ब्लॉक नंबर 1023 टू द फर्स्ट यूजर एंड देन ब्लॉक नंबर 1024 टू ब्लॉक नंबर 2047 आप रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. सो एट द बॉटम लेयर रनिंग इज द कर्नल मोड is a program that is called an exokernel, and over that you are running a virtual machine. So its job is to allocate resources to virtual machine and then check any attempt to use them by an unauthorized user. Make sure no machine is trying to use somebody else's resources. ठीक, ये उसकी बजाय इसके के पहले तो पूरी मशीन थी, हर यूजर हर चीज एक्सेस कर रहा था, अब उसकी प्रोटेक्शन कर दी है. अब the exokernel is running. Exokernel will make sure कि जो virtual machine आप दे रहे हैं on the basis of certain subset of resources है, हर आदमी अपने allocated resources में रह के, हर user अपने resources में रह के उसको अपने अपने programs को execute कर रहा है. So each user level virtual machine can run its own operating system as on VM370, except that each one is restricted to the resources it has been allocated. The advantage of exokernel scheme is that it saves a layer of mapping. Mapping क्या है कि पहले जब सारे के सारे resources होते थे तो पूरे resource को मैप करना पड़ता था. मैप करने का मतलब है कि उसको एक्चुअल रिसोर्सेज तक लेके जाना पड़ता था कि एक्चुअल रिसोर्सेज उसके पास कौन से हैं, क्योंकि वो एक सिमुलेशन थी. तो एक लेयर थी जो रियल रिसोर्सेज को और एक्चुअल रिसोर्सेज को मैप करती थी उसके ऊपर. यहाँ पर क्योंकि ये लेयर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहाँ पे सबसेट ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लिहाजा ये लेयर आपने एलिमिनेट कर दी, तो आपने इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर दिया. मैंने आपसे कहा था ना कि
वर्चुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, तो ये वर्चुअलाइजेशन का एक और फेस है जिसको हमने एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर का नाम दिया, क्योंकि इसमें और उसमें मेजर डिफरेंस ये है कि वर्चुअल मशीन में पूरे के पूरे हार्डवेयर, पूरे के पूरे रिसोर्सेज जो हैं वो हर एक को नज़र आते हैं और हर एक को एलोकेट हो जाते हैं एज इफ दोज आर द एक्सक्लूसिवली एलोकेटेड रिसोर्सेज टू एवरी यूज़र, जबकि एक्सो कर्नल में ऐसा नहीं है। एक्सो कर्नल में सबसेट, उन तमाम रिसोर्सेज के सबसेट्स कर दिए जाते हैं एंड ओनली द सबसेट ऑफ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू वन वर्चुअल मशीन। रिमेनिंग कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, सो द एक्सो कर्नल provides you some advantage, but obviously it has got also few limitations also. So with this we conclude the end of the lecture today, or also we have come to the end of the chapter number 1. इस chapter के end में I advise you to read out some topic which are the C language and the Java language, the comparison, and then the strong justification of using the C language for developing different operating system, the capability of C language to handle big projects. So basically इसमें बहुत ज़्यादा technicalities नहीं है, और by this particular time जब हम इतनी ज़्यादा technical चीज़ें discuss कर चुके हैं, उसको समझने की कोशिश की है हमने, I'm sure you should be able to understand that. So इंशाल्लाह अगले lecture से I will start with the next chapter, which is chapter number 2, that is the process and threads. So till then, Allah Hafiz.